Welcome to Honorable Chancellor Dr. Sandeep Bakshi. I request the students to give Sir a round of applause, a hearty welcome, Sir. Our freshers in the Pandal, they give you a warm welcome, and Dr. Preeti Bakshi, a hearty welcome, Madam, once again. I request boys and girls to give a round of applause. It's indeed a beautiful day, a sunny morning, and we pray to the Lord that the sun shines on you bright for your future as you become a part of this JNU fraternity forever. Forever, I mean to say, even if you are a pass-out batch, you will be our loved alumni forever. I request you all to give one round of applause for all of you for coming to JNU and starting your beautiful journey. I can see the students at the back not clapping. This clapping is for you students. A round of applause for all of you. I am clapping from here. See, a louder round of applause. Well done. Thank you.
In a world driven by innovation and change, success belongs to those who dare to lead. Jaipur National University Business Management School, where tomorrow's leaders are shaped and inspired. Here, ambition meets expertise and dreams take shape through knowledge and determination. Our distinguished faculty, with their wealth of experience, guide and empower students to navigate the complexities of the business world. Secure your future. Be a JNU achiever. Your stepping stone to success. Jaipur National University. We care for you. In a world driven by technology, one institution stands at the forefront: Jaipur National University School of Computer and System Science. We don't just teach computer science, we cultivate innovators, problem solvers, and creators who are ready to make their mark in the digital age. From artificial intelligence to cybersecurity, blockchain to bioinformatics, our students are at the forefront of it all. Guided by world-renowned faculty members, our students delve deep into the realms of computer science, mastering the tools and techniques that will shape tomorrow. Secure your future. Be a GNU achiever. Your stepping stone to success. Jaipur National University. We care for you. Fashion isn't just about clothes. It's a language that speaks volumes. It's a form of expression that transcends borders and tells stories. Jaipur National University School of Fashion, where every stitch weaves a story and fashion is redefined. With a curriculum that blends artistry with industry insights, our students are prepared to leave their mark on the world of fashion. At Jaipur National University School of Fashion, we don't simply embrace trends, we pioneer them. Secure your future. Be a JNU achiever, your stepping stone to success. Jaipur National University. We care for you. Fashion isn't just about clothes. It's a language that speaks volumes. It's a form of expression that transcends borders and tells stories. Jaipur National University School of Fashion, where every stitch weaves a story and fashion is redefined. With a curriculum that blends artistry with industry insights, our students are prepared to leave their mark on the world of fashion. At Jaipur National University School of Fashion, we don't simply embrace trends, we pioneer them. Secure your future. Be a JNU achiever, your stepping stone to success. Jaipur National University. We care for you. Fashion isn't just about clothes. It's a language that speaks volumes. It's a form of expression that transcends borders. Mobile. कुछ ही पलों में हमारे मुख्य अतिथि और ऑनरेबल चांसलर यहाँ पर पधारने वाले हैं और आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपनी मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट पे रखिए और इंतज़ार करते हैं खूबसूरत लम्हों का और आपकी नए जीवन के आगाज़ का. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गेट रेडी to begin the beautiful session, this induction program 2025.
as we are standing at the brink of starting your brilliant career and bright future. We are just waiting for our guests to arrive, and as soon as they come, I request you all to stand at your seat as a mark of respect. Okay, students, I hope you have kept your mobile phones on the silent mode. Thank you very much. Stay tuned to the induction program 2025. Thank you. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी,
Hello, sir. Good morning. A round of applause, boys and girls. Our guest of honor has arrived. Dr. Jagdish Chandra, CEO and Editor-in-Chief, Bharat 24 CMD, First India News. बहुत बहुत स्वागत, sir. May I request you students to give a loud round of applause, please. बहुत बहुत स्वागत है हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर राजीव दुबे जी का, चेयरमैन मैजिक बस फाउंडेशन एंड एक्स चेयरमैन महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. हार्दिक स्वागत है सर. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी तहे दिल से अपने ख़ास मेहमानों का स्वागत करती है. Honorable dignitaries, once again, good morning, namaskar, adab, abhinandan, satkar. Honorable dignitaries and my dear eclectic and bright freshers, on behalf of JNU, I, Rana Zaidi, and my co-anchor students, Sanya and Vinisha, extend a hearty welcome to you all on this occasion of the Freshers Welcome Come Induction Program 2025 on this pleasant morning. Through trials and triumphs, you have paved the way, a lifetime of excellence come what may. Welcome to the large and beautiful JNU family. आज आपकी academic session का शुभ आरंभ होने जा रहा है. All your wishes and aspirations are bound to come true as we are beginning this 2025 session on this auspicious day. A sublime emotion of supreme joy waft over us with a sense of gratitude at the commencement of this 18th Induction Day ceremony. Our joy at the beginning reiterate our prayers to the Lord that we reach advanced heights of success with the spirit of discernment as we all set our sights for your brilliant future. Dear freshers, ladies and gentlemen, now is the time to officially begin the 2025 Welcome Come Orientation Program by offering an invocation to Ma Saraswati, the goddess of learning, in the form of prayers and flowers, seeking her blessings for the health, peace and well-being of every student, faculty and the entire JNU fraternity. With immense pleasure and pride, I invite Honorable Chancellor Sir, Dr. Sandeep Bakshi, Honorable Pro-Chancellor, Professor H.N. Verma Sir, Honorable Vice-chancellor, Dr. R.L. Raina, Dr. Preeti Bakshi, Executive Director, our respected Chief Guest, Mr. Rajiv Dubey, Chairperson, Magic Bus Foundation and Ex-Chairman, Mahindra Insurance, and Dr. Jagdish Chandra, CEO and Editor-in-Chief, Bharat 24, CMD, First India News. Dear dignitaries and guests, kindly proceed for the lighting of the auspicious lamp. Ya kundendu tusharhara dhavala, ya shubhravastra-vruta, ya veena varadanda-manditakara, ya shveta-padmasana, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं
Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you very much, dear guests. Dear dignitaries and guests, we are eager to welcome you in the realm of serenity and delight. And we open our doors wide. तो आइए बदस्तूर अपने dignitaries और guests का स्वागत करते हैं. Love planted a rose and the world turned sweet. And with this sweetness of the rose, we begin our floral welcome. May I request Honorable Pro-Chancellor, Professor H.N. Verma, sir, to present a bouquet to our Honorable Chancellor, Dr. Sandeep Bakshi. Welcome, sir. A hearty welcome, sir. A round of applause, dear students. Thank you very much. May I now request Honorable Vice-chancellor, sir, Professor R.L. Raina, to present a bouquet to our esteemed guest, Mr. Rajiv Dubey. A hearty welcome, sir. Thank you very much. May I now request Honorable Vice-Chancellor, Professor R.L. Raina, to present a bouquet to our esteemed guest, Dr. Jagdish Chandraji. Welcome, sir. A hearty welcome, sir. May I now request Honorable Vice-Chancellor, Professor R.L. Raina, sir, to present a bouquet to our Executive Director, Dr. Preeti Bakshi. Hearty welcome, madam. Thank you very much, sir, madam. Thank you so much. Dear students, university is not just a place for learning, but becoming. And your journey begins here, so make it count. At the outset, I would like to compliment parents and guardians for choosing JNU Jaipur for educational pursuit of their children. Let me assure you on behalf of JNU that you have chosen the right place. This is our 18th year as a university and we have earned remarkable accolades, essential recognitions and prestigious approvals from the national, statutory and regulatory bodies like the UGC, AICTI, BCI, PCI, MCI, NCT, NAC, etc. We have been accredited with A+ grade by the National Assessment and Accreditation Council, NAC, ICR Agriculture and successful NABH accreditation. Dear learners, let me inform you that we have been consistently maintaining the benchmark of staying amongst the top prestigious private university of the country. Yes, here we have as much opportunities to learn as we have for extracurricular activities, namely sports, theatre, debates, etc. Discipline is the mool mantra of JNU. Besides teaching, the university offers a variety of academic and cultural forums for confidence building and holistic grooming of your personality. There are classes in soft skills training too. We have tie-ups with reputed universities and institutions for a global exposure for our students. And let us not forget the role which the various academic and cultural clubs play in the holistic development of our students. We have several clubs like the Readers and the Writers Club, the Debaters Club, the Dramatics Club and the Go Green Club to provide the young learners the platform for expressing their creative talents, for boosting their confidence, thereby aiming for excellent holistic growth. विनीशा, तुम टेक्नोरास को कैसे भूल सकती हो? वही ना जहाँ जोश, जुनून और जिंदादिली एक साथ मिलते हैं. Yes, absolutely right. Technoraz, dear friends, is a cultural and technical fest which is a very popular event on our event calendar. Yes, ladies and gentlemen, a beautiful day. In fact, we have been blessed that we have such esteemed people around us who have been so successful, and now I take the opportunity to invite our Vice-Chancellor, Professor R.L. Raina, sir, to say a few words and bless the freshers. Sir. नमस्कार।
our beloved Honorable Chancellor, Dr. Sandeep Bakshi, our Honorable Pro-Chancellor, Professor Verma, our chief guest of this inaugural ceremony of the induction program, Shri Rajiv Dubey ji, our esteemed guest of honor, Shri Jagdish Chandra ji, our Executive Director, Dr. Preeti Bakshi ma'am, my faculty colleagues, students of the university, and students getting inducted today on this most auspicious occasion to this university. You know we have esteemed, learned speakers to inspire us, to motivate us. I will, in the fitness of things, share with you 2-3 things that you have to be mindful in order to make the journey of this university and yourselves and ours a successful one. Rana has, through her students, given you a very good glimpse of the university. In the backdrop of that glimpse, I congratulate each and every one of you getting inducted today to this university. Congratulations for 2 things. One, you thought of pursuing your academic journey, which will shape your lives for years ahead. With this university, we started its beginnings just in 2007 and was the first university in the state of Rajasthan, for that matter, as a private university to be accredited by the body that she said, NAC, in just about 7-8 years. That is the glory that we enjoy and relish. This accreditation is not a one-time affair. This gets reviewed, renewed, and we are delighted to share with you, and that's why I'm congratulating you for your right decision to be at the right university, because this university of yours stands as NAC A+ accredited. That is one reason for me to extend you my greetings and congratulations. The second reason is the kind of choice that you have exercised to pursue a particular program. All the professional programs, be it nursing, be it agriculture, be it engineering technology, be it pharmacy, name it, are recognized, approved, accredited by the various professional bodies like the Nursing Council of India, Pharmacy Council of India, Indian Council of Agriculture Research, to name a few. So it is your decision I want to greet you for. Third is, as I say anywhere and everywhere in the world that I go, that this is one of the fastest growing higher educational institutions of the country. Having started its establishment in 2007 and now in 2015, starting its humble beginnings from a couple of schools, 2-3 programs, is operating its activity mix from 16 cutting-edge schools from 4 lush green campuses. The institute's leadership is very magnanimous and very large-hearted in terms of augmenting each and everything that is of utmost use to you in making and shaping your careers. What am I referring to in particular is the state-of-the-art classrooms, the labs, and whatnot that you will experience during your stay with us for 2 years, 3 years, 4 years, as far as your program requirements are concerned. Not only that, in the class and outside the class, whatever needs to be done by you to give shape to your potential, which our faculty members will try to explore and explode with you, you will have ample opportunities, as was mentioned, by being part of various clubs and curricular, co-curricular and extracurricular activities. Our Chancellor takes keen interest to see that you develop as a human being, you develop as a complete integrated person. So, my dear students and my dear students' parents and guardians, congratulations once again for you to have
decided to make sure that you are part of this wonderful university. From the films and other things, you could get a feel and flavor of what kind of this university is. This is all yours. Onus is on you to make the most of each and every resource that has been made available to you, whether they are the highly qualified and experienced faculty, whether that is the state-of-the-art infrastructure in terms of the classrooms, labs, library facilities, infrastructure facilities, particularly the Wi-Fi environment. Make use of such resources. Make, I say, use of such resources. But at the same time, I am requesting you, you will get out of this great academic institution with flying colors. We are committed on that. Our faculty, our leadership is committed on that. But what we would expect from you and your dear parents and guardians is in terms of utmost cooperation on each and everything that your teachers, that your staff do with you. Surrender yourself for these 2, 3, 4 years to this great Gurukul. You will see where the success is. I'll give an example because I keep on taking morning rounds of each and every school. One instance just a week back happened. 4 students, would-be prospective students, were talking to one of our school heads. Shilpi is her name, in the SLAS campus. I just overheard the conversation. There were 4 of the students wanting to firm up their admission with us. I was delighted the way they were aware about the university, the way they were asking pertinent questions to the university. The 3 of them got satisfied 101% and did whatever was required to be done then and there. One student's question I just heard from a distance. How do you manage? How do you take care of our attendance? The answer was, we are a law-abiding university. We do make sure that students attend the classes. So what I am trying to say is, you have taken a right decision, you have taken an informed decision. Be aware of what are various small little simple guidelines which will make your journey with us and our journey with us in the interest of this great Gurukul a successful and glorious one. With these few words, I, on behalf of all my faculty colleagues, ably led by the directors sitting in the front row and also being mentored by our Honorable Pro-Chancellor, Professor Verma, Executive Director, Dr. Preeti Bakshi ma'am, and of course, none other than our beloved leader, to see that you fulfill your dreams and aspirations with you. I'll not take much of your time because I am habitual of meeting and interacting with you in your classes, in your labs, and I think I have been put to deliver a session tomorrow, the first session on mindfulness. So I'll have more and more opportunities to talk to you. Let us hear from the people who have taken the time out to bless you, to encourage you, to inspire you, to motivate you. Tell you only one thing: you have done what you wanted to do, but how to make the most of this great opportunity and university is what we have suggested to them to tell you. With these few words, once again, welcome all of you, your parents, your guardians, and everyone sitting in the pandal to this great, glorious university. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your inspiring words. A spirited Spartan who has nothing else to declare except his genius. Genius decoded is our Honorable Chancellor. Please give a round of applause as I invite him to bless you all. A round of applause, dear freshers. Respected members on the dais, our guests, chief guests for the day, I have so many ways to address Kadal Sahab and Rajiv ji, but today, away from the students who are joining today, Ma'am Zaidi told they are freshers. I don't think they are freshers, they are our future. तो पहले future के लिए एक round applause हो जाए, क्योंकि JNU का future ही यही है. आप अपने लिए ताली तो बजा सकते हैं जोर से, क्योंकि मैं आप में फ्यूचर देख रहा हूँ.
मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करता हूँ और आज मैं दो शख्सियत जो स्टेज पे बैठे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जिक्र करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि ज़िंदगी की प्रैक्टिकलिटी और ज़िंदगी का अचीवमेंट कैसे होता है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा डॉक्टर जगदीश कातिल को। डॉक्टर जगदीश कातिल इज़ एन रिटायर्ड IAS ऑफिसर, बट जब वो IAS ऑफिसर थे और गवर्नमेंट ने उनको, मैं कई बार ये इंस्टेंस देता हूँ, गवर्नमेंट ने उनको एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है सरस डेयरी जो कि लॉसेस में से 20 साल से, जब उनको वहाँ शिफ्ट किया तो उन्होंने सोचा कि डॉक्टर जगदीश कातिल देखते हैं कि क्या अचीव कर पाएंगे। तो डॉक्टर जगदीश कातिल, इनका नाम कातिल है, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि उस ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले कई सालों से लॉसेस में थी और इट वाज अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, he turned it into a profit organization and today it is one of the most wanted departments in the government. So this is what turned around. The second example I'll give is that he had a foresight. Not many people in Jaipur know that, because he anticipated that there is going to be a huge traffic in times to come. When he was there, he was in the 90s, 20s and 30s, that there should be a ring road right across the city. And today the outer ring roads that you see, including the road that passes from Jawahar Nagar, planned for Jagatpura, a tunnel through the hills is his thought process. अभी भी उसमें एक टनल का रुका हुआ है फॉरेस्ट की वजह से, but a man who could foresee, a man who could see the future. So children, you've come here, you must have your focus very clear. And today he is handling one of the biggest media schools. From the cadre of an IAS officer to a transformation of becoming a media house is what Dr. Katil has done. We request such guests to come and address the students because we want you to see live examples of what people have done in their lives and what achievements they have done. So you must, I will only say three things. One is you must be very focused in life, and your focus should be such that you don't give up even in spite of a lot of hurdles. I face problems every day. Saturday I was in a different frame of mind. Monday I am in a different frame of mind. It did not matter because I know that my goal is that my students have to benefit from whatever is there. So as students of JNU, who I am proud of, who are my future for the next 3 to 4 years, never give up in life if you've decided on a path. That is the objective of your life, and that is our objective. 3, Professor Ren has already spoken to you about all the formalities. There is no statutory body in the country from whom we have not taken approval because we want you to have the authenticity of your degree. 2, that amongst a few limited universities in the entire country, we are amongst the 5 only who have been permitted to open a campus in UAE, in Dubai, for students opportunities that they can go and study abroad, they can go and work abroad. This has gone through more than 18 channels. This has gone through all the departments where, right from RBI to IB to Home Ministry, and so many departments have to give clearances. So you're a proud student of an organization which has its ground very, very firm, and it has ample opportunities to give you in future. I pray and I wish that you enhance this once you join here. I would like to share with the parents and members on the dais who are sitting here that the admission figure today has touched 4,000. But by the time we wind up in August, because August and September is the time, we'll be crossing 6,000 students for this year, which is one of the biggest numbers in Rajasthan. Rather, it is the biggest number in Rajasthan. On the other hand, we have Mr. Rajiv, who has been with Tata's twice and with Mahindra for more than 12 years, and at a level where decision making is done. So you will have an interaction with both of them and learn more. My duty was to tell you
the kind of people I am also inspired with. So parents, please have complete faith in our system. Please believe that we are here to build up a future which is brighter and better. And your faith in us has given us the strength to do better. So thank you so much, all the members and all the students. God bless you. Thank you so much. Thank you, sir, for establishing and holding aloft the prestige and academic credentials of JNU and making us all a part of the glorious journey of Jaipur National University. Thank you very much, sir. Dear boys and girls, Mr. Rajiv Dubey, a distinguished leader who has been the former chairman of 3 Mahindra Group companies, Mahindra First Choice Wheels, Mahindra Insurance Brokers, and Mahindra Steel Service Center, with a legacy of excellence and visionary leadership. Mr. Dubey has also served on the governing body of several reputed institutions. His work continues to inspire innovation and responsible leadership across sectors. It's my proud privilege, and may I now invite our esteemed guest, Mr. Rajiv Dubey, Chairperson, Magic Bus Foundation and ex-Chairman, Mahindra Insurance Company, to share some words of wisdom with our students. I request a round of applause, dear students, as we welcome Sir at the podium to bless you all. Good morning, namaskar and pranam, distinguished dignitaries on the dais, in the stage, and above all, dear students. ये मेरे मन में असमंजस है कि मैं किस भाषा में आपसे ये वार्तालाप करूं, अंग्रेज़ी में कि हिंदी में। तो बहुत डिस्कशन हुआ इसके ऊपर प्रोफेसर रायना के साथ, और फिर फाइनल डिसीजन यही है कि मुझे आदत है ज़्यादा अंग्रेज़ी में बोलने के लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ज़्यादा अधिकांश मेरा जो वक्तव्य होगा वो अंग्रेज़ी में होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ हिंदी में भी मैं बोल सकूं। तो अगर कुछ गलती होती है मैं पहले से ही आपकी क्षमा मांगता हूं। तो पहले heartiest congratulations to all of you, to the people who have created this wonderful organization, to the people who are running it, and to you who have joined this institution. आने वाले जो आपके वर्ष होंगे इस यूनिवर्सिटी में, ये केवल जीवनचर्या के लिए नहीं है, ये जीवन के लिए आपको तैयार करेगा। तो दोनों पे आपको ध्यान रखना है। हमारे पहले जो 2 लोग बोले, उन्होंने क्लियरली ये समझाया कि आपका एक सपना, आपका लक्ष्य, आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी यही कहूँगा, और मैंने भी ज़िंदगी में यही सीखा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेरा इरादा क्या है, व्हाट इज़ माई पर्पस, व्हाट इज़ माई इंटेंशन। एंड इट इज़ दिस पर्पस, इट इज़ दिस इंटेंशन, इट इज़ दिस ड्रीम, दिस सपना दैट एक्चुअली टेक्स अस थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। हर एक के जीवन में सफलता होती है और असफलता भी होती है, जीत होती है, हार होती है, खुशी मिलती है और दुख मिलता है हर एक के जीवन में। लेकिन अपना सपना, अपना इरादा, अपना लक्ष्य हमको एक कंपस की तरह, एक लाइट हाउस की तरह जीवन और अपने पर्सनल और ऑफिशियल जीवन में हमको गाइडेंस देता है। तो पहला मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज do some swadhyay, some reflection, and try to figure out what is it that I want to be and what is it that I want to do, not only in the university but also when I leave the university. Each of you will come up with a different answer, but that answer, वो जो जवाब आपको मिलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, उसी से आपको गाइडेंस मिलेगी और वही आपको ज़िंदगी के उतराव और चढ़ाव में आपका साथ देगा। उससे बड़ा साथी और कोई नहीं है। ये मैं पहला कहना चाहता हूँ।
दूसरा ये भी कहा गया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉट एवर यू डू, जो भी आप करते हो, प्लीज गिव 100% ऑफ योर सेल्फ टू दैट वर्क। 100% दीजिए। जो भी आप कर्म करते हैं, 90% गुड इनफ नहीं है, 95% गुड इनफ नहीं है, 99% गुड इनफ नहीं है, 100% देना है। जो भी हम करते हैं पूरे विद हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल, वी हैव टू प्लंज इनटू आवर कर्मा 100%। ये एक मंत्र लेके चलिए, जो भी आप करते हैं 100% से कम उसके अंदर मत डालिए। और ये भी बताया गया है पहले कि अगर आप एक जर्नी पे निकलते हैं, when you go on a journey, don't give up. You will face problems, but you will also get opportunities. So never give up. Keep going for what you stand for what you dream for, and you will get your dreams, because I can see you are all leaders of tomorrow. So let me now, most humbly and respectfully, अब हिंदी में अब नहीं बोल पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मेरे विचार में कल का जो लीडर है, और आप सब लोग कल के लीडर हैं, आपको किस तरीके से इस दुनिया को देखना है, उसके बारे में मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। और इस फॉर्मूला को मैं 3+5 बोलना चाहता हूं। लेकिन इस फॉर्मूला के पहले किस तरह की दुनिया है जिसमें आप निकल के जाएंगे, उसके बारे में 2-4 शब्द मैं बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द वर्ल्ड इन विच यू विल लिव एंड ऑपरेट। दिस इज द एज ऑफ टर्बुलेंस एंड चेंज। ये बदलाव का युग है। There are tectonic forces of change. Technology, of course, is one which everybody talks about. Technology will be like electricity. It will come into everything that we do, wherever we may go, and you have to make friends with it. But more, as important as technology, are several other changes that are taking place. एक तो demographics है। कई देशों में यंग लोगों की कमी है। हमारे जैसे देश में यंग लोग बहुत हैं, उनके लिए जीवनचर्या की कमी है। तो लेडीज भी उभर के आ रही हैं, माइग्रेशन हो रहा है। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टेक्नोलॉजी शिफ्ट, दूसरा डेमोग्राफिक शिफ्ट, तीसरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। ये 300-400 साल से द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय यूरोप एंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, बाय द वेस्ट। But this wheel of time is shifting. Clearly, there is a shift taking place from the west to the east, from the north to the south. Or India is very well placed. We have the potential. हिंदुस्तान में अभी बहुत आगे बढ़ने का स्कोप है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो जीवन है, ये वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस, सब कुछ बदल रहा है। फिर इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग पुश बैक कर रहे हैं, चाहे कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे सप्लाई चेन के मेंबर्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे सरकार हो। और सबसे बड़ा चेंज क्लाइमेट चेंज है, वो भी हमारे ऊपर दबाव दे रहा है। तो एक तो हुआ कि वॉलेटाइल, सब कुछ बदल रहा है, जो कल सत्य था आज वो सच नहीं है। दूसरा पुशबैक, और तीसरा है हाइपर कनेक्टेडनेस। हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जीवन में, इस तरह के वर्ल्ड में, हमने एक आपको मंत्र तो दिया कि वो सपना, पर्पस, ड्रीम, और हमने नहीं और लोगों ने भी कहा। अब हम 3+5 के पास आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सोच में 3 पिलर्स रहे, ये एटीट्यूड है। पहला पिलर है एक्सेप्ट नो लिमिट्स, किसी भी सीमा को मानिए मत। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इन ईच ऑफ अस, हर एक में जो पोटेंशियल है, वी यूटिलाइज ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ दैट पोटेंशियल। सो हर एक आदमी के पास जितनी क्षमता है,
उसका हम लोग बहुत कम यूटिलाइज करते हैं। जो जीनियस होते हैं, संदीप जी जो हैं, वो हो सकता है 10-15% यूटिलाइज करते हो, मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग 5-6% यूटिलाइज करते हैं। लेकिन दोनों केस में बहुत बड़ा पोटेंशियल बना हुआ है, और ये आपके लिए भी सही है। इट्स ऑल ट्रू फॉर एवरीबडी एंड फॉर एवरी सिचुएशन। सो द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज इन आवर माइंड। सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा जो है वो दिमाग की है, वो हम लोगों को अंदर बंद करके रखती है। अगर आप अपने दिमाग को ओपन कर ले एंड एक्सेप्ट नो लिमिट्स, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यक्ति में, आप देखें कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सीमा का कोई अंत नहीं है। और ये जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है कि उनको ऐसे सिचुएशन में रखा गया और भी एग्जाम्पल दिया गया और उन्होंने उसमें मैजिक कर दिया, कमाल कर दिया। तो ये एटीट्यूड आपका पहला रहना चाहिए, एक्सेप्ट नो लिमिट्स। दूसरा एटीट्यूड, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग। जरा हट के सोचिए, जिस रास्ते पे सालों से भीड़ जा रही है, उसी रास्ते पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक लक्ष्य, हजारों रास्ते। उपनिषद में कहा गया, हजारों नहीं, उपनिषद में तो कहा है लाखों रास्ते हैं। आप किस रास्ते को चूज करेंगे, आप किस तरीके से इनोवेट करेंगे, वो जरूरी है। तो पहली सोच, एटीट्यूड, एक्सेप्ट नो लिमिट्स। दूसरी सोच, एटीट्यूड, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, इनोवेटिव, हट के सोचिए। और तीसरी, ड्राइव पॉजिटिव चेंज। जो भी आप करें उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए हर एक के ऊपर। जितने लोगों से आपका संपर्क आता है, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी रहेगा। तो मैंने कहा फॉर्मूला है 3+5। 3 मैंने आपको चीज़ बताई। एक्सेप्ट नो लिमिट्स, किसी भी सीमा को स्वीकार मत कीजिए। 2, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, हट के सोचिए इनोवेशन के लिए। और 3, जो भी कीजिए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। वो आपको हर समय सोचना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सोचना काफ़ी नहीं है, सोच को बदलना है कर्म में। संदीप जी भी बोले, मैन ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल। तो आप जो भी करें वो ऐसा हो जिसका इफेक्ट पॉजिटिव हो, वो बड़ी चीज़ होगी। तो 3 मैंने बोल दिया। अब मैं 5 का रहस्य खोलता हूँ। ये 5 बिहेवियर हैं जो मैं समझता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो टुमारोज वर्ल्ड, टुमारोज लीडर, जो कि आप सब लोग हैं, उनको बहुत सहायता देगा। पहला है, किसी भी स्थिति में, इन एनी सिचुएशन, यूज द होल माइंड। होल माइंड का मतलब क्या है? साइंस बोलती है कि एक लेफ्ट ब्रेन है, लॉजिक, इंटेलेक्ट, रैशनैलिटी, सोच। राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, वो है इमोशन, कनेक्शन, इमेजिनेशन। तो किसी भी स्थिति में केवल आपको लॉजिक और रैशनैलिटी पे नहीं जाना है, और ना ही केवल एम्पैथी, इमोशन, इमेजिनेशन पे जाना है। किसी भी सिचुएशन में दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तब जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो सोल्यूशन मिलेगा, जो रास्ता दिखेगा, वो अच्छा रास्ता होगा। तो पहला है होल माइंड। दूसरा, बी अ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब कि अगर आपको 1 मिलता है किसी चीज़ का, उसको आप 100 कर दें। मल्टीप्लायर किस चीज़ का? मल्टीप्लायर पैशन का, एंथुजियाज्म का, ओनरशिप का। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आपका संपर्क है, उनके अंदर की ऊर्जा को आप बाहर लाइए, उनको उत्तेजित कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए, ताकि वो आसमान को छू सके, आसमान के ऊपर भी चले जाए। तो ये होता है मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर सुनता है, मल्टीप्लायर लोगों को रेस्पेक्ट करता है, मल्टीप्लायर हर समय ये नहीं बोलता है मैं जानता हूं तुम करो। ये पुराना स्टाइल था, कमांड एंड कंट्रोल। आज की दुनिया में, जो इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया, मैंने आपको बताया, वूका, पुशबैक एंड हाइपर कनेक्टेडनेस, और उसमें ये कमांड एंड कंट्रोल जो है वो काम नहीं करेगा। तो आपको
मल्टीप्लायर होना है, आपको सुनना है, आपको रेस्पेक्ट करना है लोगों के व्यूज़ को। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ, आई हैव ऑल द आंसर्स। नो, यू फोकस ऑन आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। क्या असली सवाल है, क्या प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है, और फिर टीम के साथ आप उस प्रॉब्लम के आंसर को क्रिएट कीजिए। और ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सब एआई वगैरह के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। एआई में सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो होता है प्रॉम्प्ट, कि किस तरह के हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि एआई का पावर सबके पास हो जाएगा। अब तो मतलब चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई के बाद आपको कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी में, राजस्थानी में, हिंदी में, उड़िया में, जो भी भाषा है उससे आप कोड लिख के बता सकते हैं। तो फिर क्या डिस्टिंग्विश करेगा हमको दूसरों से? किस क्वेश्चन को हमने आइडेंटिफाई किया, किस क्वेश्चन का हम जवाब सीख रहे हैं, और एक बार हमने लीडर ने तैयार कर लिया बात करके कि हाँ ये रियल प्रॉब्लम है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना, फिर एक साथ ह्यूमन बीइंग्स, मशीन्स एक साथ मिलके उसका आंसर क्रिएट करें, वो होता है मल्टीप्लायर। तीसरा, इनोवेशन की ज़रूरत होती है। इनोवेशन कैसे होता है? जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम लोग कुछ रिस्क लेते हैं, जब हमारे अंदर साहस हो कि हम उस रास्ते को अपनाएं जिस रास्ते पे पहले कोई चला नहीं है। तो सबसे बड़ी जो कंस्ट्रेंट होती है, जो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने से, रिस्क लेने से रोकती है, वो होता है डर, फियर ऑफ फेलियर। वो हम सब लोगों में है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं उनमें ये नहीं होता है कि डर नहीं होता है, लेकिन वो लोग उस डर को लेके आगे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी सफलता मिलती है, समटाइम्स यू गेट सक्सेस, समटाइम्स यू लूज, बट यू हैव टू एनकरेज पीपल टू टेक रिस्क, बिकॉज इट्स ओनली व्हेन यू टेक रिस्क, इट्स ओनली व्हेन यू एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन इनोवेट। So the important thing in tomorrow's world is not that you tried and failed, but what did you do after you failed? आपने कोशिश की, हो सकता है आपको सफलता नहीं मिली, ठीक है, लेकिन आपने फिर क्या किया? आपने जो आपका एक्सपीरियंस हुआ असफलता का, लॉस का, उससे आपने निचोड़ लिया, क्या लर्निंग मिली, और उस लर्निंग को आपने यूज़ किया आगे के लिए। तो फेलियर बिकम्स द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। और ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि कल के लीडर जो हैं, हाउ कैन दे मैनेज फियर एंड लेवरेज फेलियर। किस तरीके से वो अपने डर से उसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपने डर को एक्सपेरिमेंट के लिए, और किस तरह असफलता और हार से सीखते हैं, ताकि हार और असफलता रास्ता बनती है सफलता और जीत के लिए। मैं आपको एक कोट पढ़ना चाहता हूँ। ये J.K. राउलिंग एक बहुत फेमस ऑथर हैं। हार्वर्ड कमेंसमेंट एड्रेस में उन्होंने फेलियर के ऊपर कहा था। 4 लाइन में आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी में मैं पढ़ूंगा। It is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. The knowledge that you will emerge wiser and stronger from setbacks, you will never truly know yourself or the strength of your relationships until both have been tested by adversity. Such knowledge is a true gift, and even though painfully acquired, it has been worth more to me than any qualification I ever earned. Unquote. अब मैं चौथे बिहेवियर पे आता हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का के कई मतलब होते हैं, ये बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी भी है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल रूप से बोल रहा हूँ। माइंडफुलनेस का मतलब होता है टू बी ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन एनी मोमेंट। कि अगर हम किसी स्थिति, वर्तमान स्थिति में हैं, तो क्या हम सुन रहे हैं कि आसपास की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस लोग खोज रहे हैं, उस नॉलेज से हम इनोवेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन पास्ट। हम लोग अपने भूतपूर्व जीवन के हम लोग बंदी हो गए हैं। हम लोग वर्तमान में रह नहीं सकते। हम लोग वर्तमान में अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग को कैसे मालूम होगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम किस चैलेंज को लेके इनोवेशन करें और एक ट्रांसफॉर्मेशन करें और एक नई दुनिया बनाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग में क्षमता होनी चाहिए कि हम लोग अपने पास्ट, अपने भूतपूर्व जीवन के बंदी, प्रिजनर न हो। वी शुड नॉट बी प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट. We should have the ability to live in the here and now and to be aware of possibilities and to be aware of which of these possibilities we can take up as a challenge to create a brave new world. I want your permission for a small quote on this. Look well to this day. इस दिन को अच्छी तरह से काटिए. For in its short course lie all the realities and verities of existence. क्योंकि आज इस दिन में पूरी दुनिया का हर एस्पेक्ट मौजूद है. The splendor of action, the glory of achievement, the sorrow of loss and separation, the joy of giving. For yesterday is but a dream and tomorrow only a vision. But today, well lived, makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Look well, therefore, to this day. Such is my salutation to the dawn. ये कालिदास है, कह रहे हैं कि अगर आज आप अच्छी तरह से जीते आज को, तो हर कल जो भूत है वो एक सुंदर सपना होगा और हर जो भविष्य है, हर एक दिन कल आने वाला, उसमें आपको होप और इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप आज का दिन अच्छी तरह, पूरी तरह अपने 100% दे के जिए। ये मेरा सूर्योदय से नमन है, ये मेरा प्रेयर है, सैल्यूटेशन टू द डॉन। ये कालिदास है। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट। मैंने कहा था 5 बिहेवियर। पहला बिहेवियर था होल माइंड, दूसरा बिहेवियर था मल्टीप्लायर, तीसरा था मैनेजिंग फियर एंड लेवरेजिंग फेलियर, चौथा मैंने अभी बताया माइंडफुलनेस, नॉट बीइंग अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, पांचवा, और अगर आप मेरे पूरे वक्तव्य में एक शब्द याद करना चाहेंगे वो है ट्रस्ट। हम लोग ट्रस्ट कर सके। अब उसको ट्रस्ट का हिंदी मुझे कोई बता दे तो बड़ी कृपा होगी। वर्मा साहब, ट्रस्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्वास। विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, हमारे पर्सनल लाइफ में और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, वो है विश्वास, ट्रस्ट। लोग हमको ट्रस्ट करें और हम दूसरों को ट्रस्ट करें जिनके साथ हम काम करते हैं। तो ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? एक तो डेफिनेटली उसमें कॉम्पिटेंस चाहिए, यू नीड कॉम्पिटेंस, बट मोर इंपॉर्टेंट देन कॉम्पिटेंस इज ऑथेंटिसिटी। डू आई से व्हाट आई थिंक एंड डू आई डू व्हाट आई से? मैं जो सोचता हूं वही मैं कहता हूं और जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं। अगर कोई इस साइकिल को फॉलो करे अपने जीवन में, तब लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और आप दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास और ट्रस्ट अगर नहीं हो, बाकी सब चीज़ें हों, कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये विश्वास और ट्रस्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जरा समराइज करूं, मैं अब अंत में आ रहा हूं, कुछ और शब्द भी बोलूँगा। मैंने कहा कि जो आप लोग सब लोग लीडर हैं कल के, जिस तरह का हमारा माहौल बन रहा है उस में सक्सीड करने के लिए पहले तो पर्पस चाहिए, इरादा, सपना, और हमने कहा 3+5 फॉर्मूला।
3 एटीट्यूड, एक्सेप्ट नो लिमिट्स, एक्सेप्ट नो लिमिट्स, सीमा को मत मानिए, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, हट के सोचिए, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आपका जिसके साथ भी आपका संपर्क होता है। और मैंने 5 बिहेवियर बोले, होल माइंड, लेफ्ट और राइट ब्रेन को कंबाइन करना, मल्टीप्लायर होना, लोगों को इंस्पायर करना, फियर को कॉन्कर करके यूजिंग फेलियर as the stepping stone to success so that you have innovation, being open to all possibilities, and last but not least to create trust. Before I end, 3 शब्द मेरे जीवन में सबसे अच्छे मेरे साथी रहे हैं. 3 words have been my best friends. अच्छे समय में, बुरे समय में. 3 शब्द, 3 words in good times and in bad times have been my best friends. Which are these 3 words? Satya, Prem, and Seva. Satya means the truth. To speak the truth as I see it, of course, not in an abrasive manner. To speak the truth, regardless of the consequences. वो है सत्य, सत्य बोलना. Prem, compassion, the ability to put myself into the shoes of the other person. हम में क्षमता होनी चाहिए कि हम जिससे रिलेट कर रहे हैं उसके जूते में हम अपने को, अपने पैर रख सके. वो क्या सोच रहा है, वो क्या मुझसे. और तीसरा है सेवा, सेवा भावना. इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 शब्द जो हैं, ये हमारे पर्सनल लाइफ में और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, और ख़ास करके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये 3 शब्द बिजनेस के लिए और जियोपॉलिटिक्स के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, बिजनेस के लिए, सब कुछ के लिए मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट होते जाएंगे. मैं एंड करना चाहता हूँ, एक मैं पढ़ना चाहता हूँ. ये मेंशन किया गया था कि मैंने टाटा और महिंद्रा में काम किया, टोटल 50 साल काम किया. तो महिंद्रा में हम लोग का एक राइज मैनिफेस्टो था जो कि हम लोग हर रोज़ सवेरे देखते थे और उससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता था, ऊर्जा मिलती थी. और वो मैं आपके सामने अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नमस्कार बोल दूंगा. टुडे इज अनदर परफेक्ट डे to defy the world's naysayers. Today we will think bigger than our size. Today we will refuse to accept limitations. Today we will not be held back by the past. Today we will focus on the future and never ever blink. Today we will break down another barrier, scoff at another convention, and use alternative thinking to solve another previously unsolvable problem. Today, we will accomplish something astounding and in the process, change someone's life for the better. Today, we will set an example for the world with boldness, with confidence, with relentless optimism. Good morning. Today is another perfect day to rise. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, sir. Your Dimag ki Lakshman Rekha said it all. Thank you so much for inspiring us and our young students. Dear students, as you know, all universities have stories. How they started, what conditions they maintained. Rana, I would like Yes, sir. to Yes, share sir. some information with Yes, the sir. students. Thank you. By the time Mr. Katil comes in, I think children, you're aware that we have been knowledge partners now with IFA, which is the biggest event only held twice in the entire history of IFA in India. And today, I had requested all the pageants and Miss India Universe that our students should be meeting them, greeting them. So they'll be here in a short while. They've already left from their hotel and they're going to be with you to welcome you. I hope you're happy with the news. Yes or no? Yeah or no? A No, round lot of of applause. applause, students. And here comes
Dr. Jagdish Katil here with us, who's going to address the public. Ladies and gentlemen, we are fortunate enough to have with us our esteemed guest, Dr. Jagdish Chandra, CEO and Editor-in-Chief, Bharat 24, CMD First India News, to celebrate the new innings of your learning crusade. His legacy is deeply rooted in shaping the regional news ecosystem. As a pioneer, he championed the rise of the regional news channels, understanding their power in connecting with grassroots audiences. He revolutionized the visual news experience by introducing continuous news strips, making real-time information easily accessible. Dr. Chandra has redefined content strategy by introducing a softer, more human-centric narrative in news program. तालियों के बीच स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का। स्वागत है सर आपका, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे नए स्टूडेंट्स को आप संबोधित करें। आखिर कैसे सच हुई? My friend and visionary leader, Dr. Sandeep Bakshi, Honorable Mrs. Bakshi, दुबे साहब, रैना साहब, वर्मा साहब, यह मेरा सौभाग्य है कि उड़ान के पहले दिन मुझे आने का मौका मिला और इन 4000 बच्चों को देखकर यह लगता है कि राजस्थान में एजुकेशन का जो फ्यूचर है वो डॉक्टर संदीप बख्शी जैसे लोगों के हाथों में सुरक्षित है। इनका बहुत योगदान है शिक्षा को सरकारी स्कूल से निकाल के एक डिग्निफाइड और रीजनेबल उस पे लाने का और शिक्षा के प्रसार का। आज से 25 साल पहले जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज का कंसेप्ट ही नहीं था शहर में, तो वो लीडरशिप, वो इनिशिएटिव डॉक्टर बख्शी का रहा है। इसके लिए मैं खुद उनकी तारीफ़ करता हूं और एक ताली उनके नाम से बजनी चाहिए। ये है, यह वास्तव में अपनी किस्म का एक अद्भुत कार्यक्रम है कि इतनी बड़ी संख्या में जो फर्स्ट डे है ज्वाइनिंग का या इस संस्थान में आने का आए और इतना भव्य आयोजन डॉक्टर बख्शी ने, उनके इंस्टीट्यूट ने, मिसेस बख्शी ने करवाया। आज जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उड़ान में, मेरा कहना ये है कि वो भाग्यशाली हैं कि उनके जीवन का पहला कदम, पहली उड़ान उन्हें इस संस्थान से मिली जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनने जा रहा है। दुबई तक में इसका एक्सटेंशन हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो उस दृष्टि से ये बच्चे, ये लोग भाग्यशाली हैं कि इतनी सुविधाओं के साथ और इतने डिसिप्लिन के साथ, इतने कंफर्ट के साथ वे लोग आज अपने एजुकेशन कैरियर का पहला कदम यहाँ पे रख रहे हैं। कविता, ये तो जब तक सुनाएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? हाँ, तो मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ बीच में। पहले ये कुछ एक मेरे वीडियोज़ हैं 5-7 मिनट के, थोड़ा सा आप देखेंगे तो फिर मैं उसको रेस्टोर करूँगा वापस अपनी बात को। आखिर कैसे सच हुई द जीसी शो की भविष्यवाणियां? एनडीए है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35 सीट, तो मोदी इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर। जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 में मोदी नहीं आएगा, तो वो भूल कर रहे हैं। टुडे इंडिया इज हैविंग अ राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। होम में अगर अमित शाह नहीं है तो फिर एनडीए नहीं। अमित शाह विल अगेन रूल होम मिनिस्ट्री फॉर अनदर 5 years। गृह मंत्री अमित शाह को नजर आ रहे हैं, अपना कार्य उनके द्वारा आज संभाल लिया गया। मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है बीजेपी 303 इनेबल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सारी संभावनाओं का जो सारांश है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह तो वैसे फौरी तौर पे कहा है कि वे संसद तय करेगी,
लेकिन जो राष्ट्र चाहता है संसद वही करेगी जो राष्ट्र चाहता है, जो लोग चाहते हैं। 90% और मेरे ख्याल से 80% तो पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती हैं कि ये हो जाए। कितना चमत्कार हो जाएगा। आप देखिए साल के अंदर आधा साल तो चुनाव में लग जाता है, आचार संहिता के अंदर है, सरकार में सब काम ठप हो जाता है, योजनाएं ठप हो जाती हैं। एक चुनाव होगा तो 5 साल के लिए शांति, सरकार को प्लानिंग करने का, सरकार को एग्जीक्यूट करने का समय मिलेगा, प्लस खर्चा आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा। दैट इज ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, लोकतांत्रिक प्रयोग है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि 2029 में निश्चित तौर पे चुनाव जो होंगे वो इसी पैटर्न के होंगे। मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई। द जेसी शो में उन्होंने कह दिया था कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि देवेंद्र फडणवीस is most likely to take over the charge of the chief minister. स्टालिन को चुनौती देते हुए अमित शाह सक्रिय हो गए तमिलनाडु में। उनका सारा फोकस इस बात पे है कि स्ट्रेटजी ऐसी बने कि डीएमके वर्सेस ऑल। तो पहला कदम वो उठा रहे हैं कि एआईडीएमके से जो है ना उनका गठबंधन हो जाए। एआईडीएमके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। काफ़ी सब्सटेंशियल टक्कर डीएमके को अमित शाह के नेतृत्व में ये सारे दल दे सकें। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू बी सीन दिस टाइम। डॉक्टर जगदीश चंद्र, the man of prediction. Dr. Jagdish Chandra, the man of prediction. ये जगदीश जी का बड़प्पन है कि वो अपने साथी को बड़ा करते हैं और इसलिए वो शब्दों में उन्होंने मुझे भी बड़ा किया। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं पार्टी का आदमी हूँ। अब मेरी दिक्कत ये हो रही है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बोलूँ या पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बोलूं। जगदीश जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है, तो इसलिए जब जगदीश जी बोलते हैं तो मुझे इनकी बात को स्वीकार करना पड़ता है और उसको इनकी बात करते हैं। जगदीश जी जैसे प्रेडिक्शंस बताकर सिद्ध होते हैं वो मुझे हासिल नहीं है। मुझे लगता है आप सही सवाल गलत व्यक्ति को पूछ रही है। अगर ये जगदीश जी को पूछती तो वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छी बात होती है। इस राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊं था ना, कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर है तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। पहली वक्त हूँ मळ्यो सीएम थया पछी जगदीश चंद्रजीने ए वखते इलेक्शन आवतुं हतुं गुजरातमां, એટલે ગુજરાતનું એમણે પ્રિડિક્શન કરી દીધું હતું કે ફરીથી તમે બેસો છો, ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી બેસશે। એટલે અહીંયા કીધું ને કે એ પ્રિડિક્શન કરે એટલે આપણે શાંતિ। એટલે એ વખતથી પરિચય થયો એમને। મારે જ્યારે જ્યારે મળવાનું થયું ત્યારે આવી રીતે જ મળવાનું થયું છે। હું એમને આમંત્રણ આપું છું, આજે ઓફિશિયલ આમંત્રણ આપું છું કે આપ ટાઈમ લઈને આવો અને સાથે અને જો ફેમિલી આવો તો અમે ગુજરાત તમને આખું ફેરવીએ। आपकी विचारधारा और आपका राष्ट्र प्रेम उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और आपने जो आज एक विषय लिए उसके लिए बहुत बहुत आभार। और भारत 24 के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में डॉक्टर जगदीश कातिल जी का ही सोच है कि न्यूज़ चैनल भी भविष्य का भारत कैसा हो इसके बारे में भविष्यवाणियाँ भी करते रहते हैं और हम सबको भी इस लाइन में लगाते हैं कि सोचो भैया क्या करोगे। क्योंकि ये जिसके बाहर करते हैं उसको सांस लेने का भी मौका नहीं देते। तो ये सोच रहे कि मैं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ, इनकी मेहरबानी के कारण से मुझे याद आ पड़ा। और इनकी टीम में जिधर जाते हैं ना सारी हवा उधर मोड़ देते हैं। जेसी जी की जो टिप्पणियां हैं जिस तरह से वो प्रमाणित हुई हैं समय समय पर, आई थिंक दैट एड्स वैल्यू एज वेल एज क्रेडिबिलिटी टू दिस चैनल। आपका अभी वीडियो देख रहा था जेसी बोस का, सबसे पहले इन्होंने कहा मोदी जी बन रहे हैं 3री बार प्रधानमंत्री। आते ही मैंने देखा मैं भारत 24 की जगह ये भारत 47 होना चाहिए, क्योंकि जब देश अपने आज़ादी के 100 साल मनाए तो विजन कैसा होना चाहिए, इस चीज की चिंता करना कि विकसित भारत कैसा हो। यदि भारत 24 कर रहा है, यदि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये हर एक भारतीय की चिंता का विषय होना चाहिए कि मेरा भारत आगे कैसे बढ़े और पूरे विश्व में उसकी छाप कैसे छुपे।
धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी का कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मार्गदर्शन दिल्ली को मिलता रहे। जय हिंद। जगदीश जी के साथ ही बैठ के थे, आप भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। और मैं जब मिनिस्टर भी था तो जब मैं मीडिया के किसी सवाल में या कहीं फंसता था, मुझे सलाह भी देते थे, गाइडेंस भी देते थे किस विषय पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना और कितना बोलना है। इस चैनल के ओनर तो है ही वो, कई मामले में अपना शिक्षक भी मानता हूँ। एक बहुत लंबे समय से मैं उनके साथ संपर्क में हूँ। दुनिया उनको जेसी कहती है, मैं उनको जगदीश चंद्रा जी बड़े भाई बोलता हूँ। वो भी सामने बैठे हुए हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, द मैन ऑफ प्रेडिक्शन। ट्रम्प टैरिफ ट्रबल, क्या भारत झुकेगा ट्रम्प की धमकियों के सामने? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। ट्रम्प द्वारा भारत पर एक तरफा 25% का टैरिफ लगाया गया। ट्रम्प के इस कदम से भारत समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि एक तरफ ट्रम्प खुद ही कह रहे थे कि भारत से टैरिफ पर बात चल रही है और दूसरी तरफ उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया। तो ट्रम्प का यह कदम उनके झूठ का पर्दाफाश करता है, ट्रम्प की मनोदशा को बताता है, उनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जिसका जिक्र भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मंगलवार रात प्रसारित द जेसी शो में भी किया था। तो ट्रम्प की गिरती हुई लोकप्रियता और उनकी मनोदशा को दर्शाने वाले जेसी शो के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्षमा कीजिए, ट्रम्प हैज गॉन मेंटल, जो है सब हंसते हैं इस बात पे, सारा संसार हंसता है, टैरिफ लगा दिया। रही बात झुकने झुकाने की, तो देखो अमेरिका को दादागिरी की आदत है। अब उसका सामना है नरेंद्र मोदी से, जो खुद में टफ, जिसे कहना चाहिए नेगोशिएटर हैं। अब भारत क्या करता है? वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। नरेंद्र मोदी आल्सो मस्ट बी ए कंसर्न पर्सन कि देखो हमारे साथ जब बात हुई तो कहाँ तक बार्गेन हम कर पाते हैं। दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पे, जो है कि नरेंद्र मोदी एक सीमा तक ही बार्गेन करेंगे, एक सीमा तक ही कंप्रोमाइज करेंगे। सर्वोपरि होगा नेशनल इंटरेस्ट। ट्रम्प का पॉलिटिकली कहा जाए तो कोई धर्म ईमान नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, जिसे कहते हैं बिजनेस इज ए प्रायोरिटी। सर, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के बारे में ट्रम्प क्या सोच रहे होंगे? ट्रम्प मस्ट बी ए सैड पर्सन दैट वे। और एक बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने कि यूके एंड इंडिया जो है पुल डाउन ट्रम्प्स टैरिफ कार्ड, टैरिफ सिस्टम। इस एक लाइन में सारी बात क्लियर है। ट्रम्प की जो दादागिरी टैरिफ ठोकने करने की, देखने की, तो देखा ये क्या हुआ भाई। मैं तो चर्चा कर रहा था अभी नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी फाइनल करके आ गए, तो एक रास्ता हो गया ना, एक टॉर्च जिसे कहते हैं, रास्ता दिखा दिया। बट एट द मोमेंट एट लीस्ट यू कैन ऑलवेज से ट्रम्प मस्ट बी डिसअपॉइंटेड पर्सन एंड मस्ट बी वरीड हाउ टू फेस नरेंद्र मोदी इन द कमिंग डेज ऑन देयर फाइनल डील। सर, आखिर कहां तक पहुंची है भारत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील? मतलब सर, भारत अमेरिका को झुकाएगा? रही बात झुकने झुकाने की, तो देखो अमेरिका को दादागिरी की आदत है। अब उसका सामना है नरेंद्र मोदी से, जो खुद में टफ, जिसे कहना चाहिए नेगोशिएटर हैं। अब भारत क्या करता है? वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। नरेंद्र मोदी आल्सो मस्ट बी ए कंसर्न पर्सन कि देखो हमारे साथ जब बात हुई तो कहाँ तक बार्गेन हम कर पाते हैं। कि नरेंद्र मोदी एक सीमा तक ही बार्गेन करेंगे, एक सीमा तक ही कंप्रोमाइज करेंगे। सर्वोपरि होगा नेशनल इंटरेस्ट। सर, मैंने ये भी सुना है कि भारत के साथ साथ अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्षमा कीजिए, बीच में थोड़ा मैंने व्यवधान डाला आपके इसमें, जो है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जयपुर में आए हैं, जयपुर वासी के नाते उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जहाँ तक बात रही, जिसे आप कहते हैं कि प्रेरणा कैसे मिले, इंस्पिरेशन नए बच्चे को कैसे मिले, क्या मिले, तो मैं अपनी एक बहुत ब्रीफली कैरियर के बारे में कहना चाहता हूँ।
और उसका क्रक्स ये है कि जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है जो आपने किया होगा वो आपकी इच्छा से होना चाहिए। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है। ये पेरेंट्स के दबाव में, मित्रों के दबाव में अगर आप फैसला लेंगे तो कामयाब शायद नहीं होंगे। मैं जब 10th में था तो मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो मैं साइंस की क्लास में बैठ गया जाके। 2 दिन तक मैं क्लास में रहा। x = y = z मेरे समझ में नहीं आया। मैंने क्लास छोड़ दी, कॉमर्स क्लास में बैठ गया जाके। घर वालों को मालूम पड़ा, 2 थप्पड़ पड़े। उन दिनों पिटाई का बाकायदा प्रोविज़न होता था, आजकल तो पिटाई अपराध है माँ बाप के हाथ से भी जो है। लेकिन वो एक फैसला जो था वो सही निकला। अगर मैं साइंस में रह जाता, इच्छा के विरुद्ध पढ़ता, तो कामयाब नहीं होता। कॉमर्स में गया, यहीं पढ़ा, M.Com में गोल्ड मेडल मिला, फिर RS में टॉप किया, IAS में आ गए जो है। अब एक सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी से मीडिया में कैसे आना। तो वैसे तो क्या है कि शौक की बात है। तो संदीप भाई तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो एक दिन सामने अपने रूम का सब रहते थे, उनकी डेथ हो गई। IAS ऑफिसर थे, रिटायर हो गए थे। वो एक दिन आए, उन्होंने कहा कि ये पड़ोसी जो है ना मेरे को नमस्ते नहीं कहता रिटायरमेंट के बाद। हमने बुलाया पड़ोसी को, वो RTI किस्म का आदमी था, खांटी किस्म का आदमी था। तो उसने सब आपने मुझे क्यों मैंने कहा यार हम गली का थानेदार समझते हैं अपने आप को, बुला लिया तुम्हें तो बताओ भी नमस्ते क्यों नहीं कहते हो, और ब्लैंक और देखते हो उसको। तो उसने कहा सच्चाई है कि रिटायर आदमी का नमस्ते करने का मन नहीं करता, और 2 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो मैं आपको भी नमस्ते नहीं करूँगा। तो मैं हिल गया, मैंने गाड़ी उठाई और सीधा पहुंचा चीफ मिनिस्टर के घर पे। वसुंधरा जी थी उस समय, और मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था। तो उन्होंने कहा इतनी लेट कैसे? मैंने कहा मैडम ये हुआ आज। उन्होंने कहा इससे क्या ताल्लुक़ है, ये बेवकूफ़ी की बात है, क्या है इसमें? हमने कहा नहीं बेवकूफ़ी की बात नहीं है, ये मुझे नौकरी छोड़नी है। उन्होंने कहा क्या करोगे? हमने कहा मैं वो नौकरी करूँगा जहाँ कभी रिटायर ही नहीं हूँ। और 90 साल की उम्र में जब मैं ICU में हूँ तब भी मैं स्टाफ की सैलरी चेक है ना साइन करता मिलूँ। तो किसी तरह मैंने उनको मना मनू के जो है और नौकरी छोड़ी, और फिर मैं मीडिया में चला गया। और मीडिया में फिर भगवान ने दूसरा जीवन दिया है, एक जीवन में 2 जीवन जिसे कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी की लाइफ, मीडिया की लाइफ। और भगवान ने जो ऐसा सुना तो संदीप जी मैंने सोचा कि मीडिया में कहाँ जाऊँ जहाँ रिटायर नहीं हूँ। पत्रिका ज्वाइन करूँ, भास्कर ज्वाइन करूँ, कि कोई टेलीविज़न ज्वाइन करूँ, इंडिया टुडे ज्वाइन करूँ। फिर दिमाग में आया कि ETV बंद होने वाला संस्थान था उस समय, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो उनके चेयरमैन से मैं हैदराबाद जाके मिला। रामोजी राव बहुत टावरिंग आदमी थे, अब इस दुनिया में नहीं। उनसे मिला मैंने, तो उन्होंने कहा बात बताइए कि ब्यूरोक्रेसी का आदमी जो है मीडिया कैसे चलाएगा। हमने कहा आपका सवाल वाजिब है, लेकिन आप इंटरव्यू करिए मेरा, और जो आपका बेस्ट एडिटर है उसको बुला लीजिए, और बेस्ट बिजनेस हेड है उसको बुला लीजिए। अगर मैं इंटरव्यू क्लियर कर दूं, उनको हरा दूं, तो आप मुझे नौकरी देना एज CEO। उनका ठीक है। तो इंटरव्यू हुआ, चांस की बात है, मैंने हरा दिया उनको, और मैं CEO अपॉइंट हो गया ETV राजस्थान का। वो लॉस मेकिंग चैनल था, 1 साल में ठीक हो गया। तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं, लॉस मेकिंग है हम तो सैलरी क्या होगी? तो मैंने कहा 1 रुपया। तो उन्होंने कहा 1 रुपया क्यों? मैंने कहा मालिक तो बन नहीं सकते, मालिक दिखना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय, यू शुड बी एसोसिएट, और डिसीजन मेकिंग में कंप्लीट फ्री हैंड रहना चाहिए। माना उन्होंने। 3 साल बाद फिर रिलायंस ने टेक ओवर किया नेटवर्क 18 के नाम से। तो मुकेश भाई ने बुलाया, हमारे साथ काम करोगे? हमने कहा सब करेंगे।
तो क्या सैलरी हम लोग 3 करोड़ देते हैं, बढ़ा सकते हैं? हमने कहा 1 रुपया। तो उन्होंने 1 रुपया क्यों? तो वही थ्योरी उनको बताई, उनकी जच गई। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं 9 साल तक जो ना ऑल इंडिया CEO रहा ETV के 20 चैनल्स का, और हमारे कार्यकाल में 20 राज्यों में चैनल खुले, बंगाल में, उड़ीसा में, सब जगह, गुवाहाटी में जो है, और 9 साल का कार्यकाल रहा। फिर आए जी में आ गए, जी के बाद फर्स्ट इंडिया यहाँ जो है, अब 6-7 साल से फर्स्ट इंडिया में है। राजस्थान का नंबर 1 चैनल है और प्रॉफिट मेकिंग चैनल है। और वो जो टेन्योर था ETV का 9 साल का, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ जो है मीडिया डेलीगेशन में लोग जाते थे बाहर, पत्रकार। तो 75 कंट्रीज़ में संदीप जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ट्रैवल किया 75 कंट्रीज़ में 10 साल में। उसमें पत्रकार साथ जाते थे 5 साल। तो मुझे 74 में उनके साथ जाने का मौका मिला, दुनिया को देखने का मौका मिला। तो क्या है कि मीडिया में सक्सेस स्टोरी हो गई। तो इसमें क्या है कि लक, अपॉर्चुनिटी, ये सब बातें तो हैं, डेस्टिनी काम करती है। तो अच्छा हुआ, सब अच्छा हो गया। अब जो है रिटायर्ड तो मैं हुआ ही नहीं कभी, मैंने जैसे मैंने आपसे कहा, आई एम 75 नाउ जो है, और सब ठीक चल रहा है। संदीप जी के बगल में जो है तो 11 किलोमीटर ट्रेडमिल कर लेते हैं रोज़ की, सुबह शाम मिला के, तो फिट हैं, अभी चल रहे हैं, चलते रहेंगे जो है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइन का सिलेक्शन आप करो वो करेक्ट लाइन होनी चाहिए। एंड देन हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सिट्यूट एट ऑल। डेस्टिनी अपनी जगह है, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट जो है आप सुरक्षित संस्थान में हैं। और रही बात मीडिया की, तो संदीप जी ये सही चयन आपने कर लिया डॉक्टर मौलिक शाह का। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, ये आदमी जो है ये फैशन भी उतना ही समझते हैं जितना कि मीडिया को समझते हैं। मैंने बात की इनसे, परसों मेरा कहीं लेक्चर था तो इनसे संपर्क हुआ बहुत दिनों बाद, 6 महीने बाद संपर्क हुआ होगा। तो मैंने कहा 4 लाइन लिख के बता दो, भेजा उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। तो मीडिया सेल आप कीजिए, उसमें बड़े काबिल और ऐसे व्यक्ति लगा रखे हैं संदीप जी ने। तो मीडिया के क्षेत्र में बढ़िए आप। और अंत में मेरा कहना ये है कि भाई मीडिया में इसमें हम लोग जो है 4 ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। भारत 24 नेशनल न्यूज़ चैनल है, नोएडा से चलता है। फर्स्ट इंडिया चैनल राजस्थान से चलता है, जयपुर से। फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार जयपुर से चलता है। एक हिंदी का अखबार है सच बेधड़क, वो भी हमारा जयपुर से चलता है। तो इन चारों संस्थानों में मीडिया क्षेत्र में जो लोग आना चाहें उनका हार्दिक स्वागत है। वो लोग कभी भी आकर के इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं, एडिटोरियल कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग में आ सकते हैं, काम सीख सकते हैं। आप ये समझिए कि डॉक्टर बख्शी एंड वी आर नेचुरल एलाइज टू प्रमोट टैलेंट इन द सिटी, वेदर इट इज़ इन मेडिकल और इट इज़ इन मीडिया जो है। तो ये सेवाएँ हैं। और कोई बच्चे लिखना चाहें, लिखने का शौक़ हो, आप डॉक्टर साहब अखबार में उनके आर्टिकल भेजिए, हमारे यहाँ अनीता हाड़ा से कॉन्टेक्ट करके जो है आर्टिकल छपेंगे। मनोबल बनता है बच्चे का, देखता है मेरा आर्टिकल छपा है जिसके अंदर जो है। तो कुल मिला के ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा आके। और आप ये मानिए कि वी आर एक्सटेंशन, जिसे कहते हैं सिस्टर कंसर्न, मिल के काम करेंगे मीडिया में। मीडिया के जो बच्चे आना चाहें उनका स्वागत है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच संदीप जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बुलंदियों को छूना मुश्किल नहीं है, लेकिन बुलंदियों पर टिकना जो है लंबे समय तक ये मुश्किल काम है, और आपने बखूबी कर दिखाया है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटिंग द स्टूडेंट्स, एंड आई रिक्वेस्ट द डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति बख्शी टू प्रेजेंट अ मेमेंटो टू आवर चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर। सर बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी, डॉक्टर प्रीति बख्शी, to kindly present a token of respect and gratitude to our chief guest and guest of honor. Thank you very much. And now students get ready to have an interaction with Miss Universe India
and Miss Teen Diva, who are going to arrive just a few minutes from now. And we are setting the stage for an interaction for the beauty queens to come and interact with you. And I will just request the dignitaries to kindly take their seats in the front row. And thank you so much for your empowering and kind words and your gracious presence. Thank you very much, sir. Thank you very much, Honorable Vice-Chancellor, Pro-Chancellor, Dr. Preeti Bakshi. Can we give a loud round of applause as sir is just passing through the corridors of this auditorium? Boys and girls, I would just like to give you a glimpse of what is going to happen. I know your heartbeat must be beating fast, but let me share with you that we have, very soon we are going to have with us Miss Universe India, Riya Singha and Niranjana Tiwari Teen Diva winner 2025. And there are other winners of Team India which are going to be in front of you. आप तैयार रहिए और कुछ ही पलों में हम आपके साथ वापस आएंगे और वो आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। सो कहीं मत जाइए और इंतज़ार करिए, थोड़ा सा बेसब्री भी ज़रूरी है और थोड़ा इंतज़ार भी। थैंक यू। कुछ ही पलों में रूबरू होने वाले हैं हम मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा से, मिस टीन डीवा 2025 निरंजना तिवारी से, रुचि यादव क्राउंड मिस टीन मल्टी नेशनल इंडिया 2025 से,
Shuddhi Mahesh, crowned Miss Teen Earth India 2025. दिव्या वाधवा, क्राउन मिस टीम इंटरनेशनल 2025 से, एंड अर्णव चतुर्वेदी, फर्स्ट रनर्स अप मिस टीम डीवा 2025 से. सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ही पलों में कहीं मत जाइए और इस सेशन को मेमोरेबल बनाते हैं. आपके इस फ्यूचर के जो आपका भविष्य है उसका जो आगाज़ होने जा रहा है उसको एक खूबसूरत मोड़ से शुरू करते हैं. धन्यवाद. And I also thank the students for supporting this program and really maintaining discipline and silence. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रोग्राम को, इसके फर्स्ट सेगमेंट को बहुत ही सुंदर और कामयाब बनाया. आई थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी द सेम इन द सेकेंड सेशन, द सेकेंड हाफ. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस. थैंक यू. I request you all to kindly take your seats as the Miss Universe India and Miss Teen Diva are going to arrive in a few minutes from now. I can see some students leaving their seat and the pandal. Kindly do not go away. There is going to be fun and so much excitement which is awaiting you. Do not go anywhere. Come back to your seats and let's begin the fun now. Check, check, check. Check.
Dear students, the exciting moment has arrived
Miss Universe India and Miss Teen Diva are just very close to the campus. I can see some of you standing out, rather many of you. Please, I request you students to be seated. The moment has arrived, the one for which we were waiting for. I request you all to get back to your seats because it is an honor to introduce a young woman who has taken the nation by storm by her grace, intellect, and confidence. She is here amongst us. Very soon she will be in the auditorium, and she has come to give her blessing, her good fortune, her good energy to you all. So please do not go away outside. I request you to be seated to welcome the symbol of elegance and empowerment, Miss India Universe, and the 5 young beautiful girls arriving to give you positive vibes. Do not go away anywhere. Be with us, be here, and good luck. Let's have a good time. Thank you. A round of applause for all of you. Hello students, are you there? I want to know, are you there? No, nothing. She would not enter. She would not enter in such low energy auditorium. Can you make a louder round of applause? Wonderful, at the back. On my right side. On my right side, students, I know you are happy to come here. Please, if you are happy, let us all know about it. A bigger round of applause. Wonderful, wonderful. Thank you very much. Thank you.
Dear freshers, I request you all to kindly be seated as we have come to know the guest has just arrived near the front gate. So students, those students who are outside, I request you all to kindly be seated immediately. This is a humble request, students. You have been a wonderful audience. Once again, please come back and be seated. The guest has arrived and be ready to give a warm welcome to them. Thank you. They have really arrived and I think you are ready for a warm welcome. And I request you all, as soon as they enter the pandal, please give them a standing ovation as a mark of respect. They have arrived. At last, the great moment has come. Yes, I can see them outside there at the main gate. So boys and girls, here comes the moment of great cheer, happiness, gaiety, and great memories. So be ready for it. Boys and girls, ladies and gentlemen, a trailblazer, a role model, and the pride of our nation. She has arrived. Hello, 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 hello. A hearty welcome to Jaipur National University. Let us welcome a trailblazer, role model, and a pride of our nation. Please join me, students. Let us give a standing ovation to the guest who has entered already, Ria, to take the stage and share her inspiring presence with us. A hearty welcome and a round of applause. Ria, the spotlight awaits you, and so do our hearts. Ladies and gentlemen, it is an honor to introduce a young woman who has taken the nation by storm with her grace, intelligence, and confidence. The newly crowned Miss Universe India, Ria Singha, stand tall as a symbol of elegance and empowerment. She's not just a beauty queen, but also an inspiration to countless dreamers across the country.
also we have Miss Teen Universe, Niranjana Tiwari, Ruchi Jadhav, Divya Vadva and Aina Chaturvedi. Congratulations, congratulations, and request the dignitaries and the guests to come for a photograph. I request the dignitaries and the guests to come for a photograph. Can we give a loud round of applause? A loud round of applause, boys and girls. Ria, the spotlight awaits you, and so do our hearts. Thank you very much. And now, moving on to the floral welcome. I request the dignitaries and the beauty queens to be on the stage. I request Miss Universe India, Ria, the spotlight is waiting for you. So be present on the stage with the beautiful young teen divas. JNU के तहे दिल से आपका स्वागत करता है. It's a parade of beauty on this induction day. Beautiful girls to inspire you. Ladies and gentlemen, it is an honor to introduce a young woman who has taken the nation by storm, Ria Singer. Ria, we are waiting for you to be present completely here and interact with the student. And here Chancellor Sir is giving a warm welcome to Ria. He has already given. And now I request Sir to present a bouquet to Miss Teen Universe India. A round of applause, Niranjana Tiwari. May I now request Dr. Preeti Bakshi to welcome Ruchi Yadav, Miss Teen Multinational India 2025. Congratulations and welcome to JNU Jaipur. Dr. Preeti Bakshi again to present a bouquet to Miss Teen Earth India 2025. Congratulations and welcome to Jaipur National University. Dr. Preeti Bakshi, I again request you to present a bouquet to Divya Vadva, Miss Teen International. Thank you very much. Thank you and warm greetings to you all. And students, are you waiting to interact with them? Yes or no? तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए, करना चाहते हैं? So I give the stage to Ria and the divas to interact with the students. Thank you.
Let us begin the interaction, and I request the team to kindly coordinate and take over. I request the technical team to kindly take over and send mics on the stage to expedite the interaction. The themes that bind us together are far more cohesive and stronger than those that separate us. Dear freshers, step into the induction ceremony and the university not just as a student, but as a seeker of purpose, passion, and possibilities. And today these beautiful divas have come to bestow good luck to you, dear promising freshers. Students, be ready, please. Are you excited? Give a round of applause for all of us. Loudly. Wonderful. The students of JNU and the faculty members, my heartfelt greetings to all of you. I'm Nikhil Anand, the National Director of Miss Universe India and the owner of Glamour & Group. I extend my heartfelt gratitude to Jaipur National University and Dr. Sandeep Bakshi ji for inviting all of us over here. It's been a great association that Jaipur National University is the knowledge partner for Miss Universe India 2025. With us today, we have Miss Riya Singha, Miss Universe India 2024. And then last night we had Miss Teen Diva 2025 finale, and the newly crowned queens are over here. We have Arna Chaturvedi, who was crowned as the first runner-up of Miss Teen Diva 2025. We have Shuddhi Mahesh, who was crowned Miss Teen Earth India 2025 to represent India at Miss Teen Earth pageant. Following, we have Miss Divya Vadva, who was crowned as Miss Teen International India. She'll represent India at the world's biggest teen pageant, Miss Teen International. Then we have Miss Ruchi Jadhav, who is crowned as Miss Teen Multinational India. She'll represent India at Miss Teen Multinational pageant. And not last but not the least, we have Miss Niranjana Tiwari, who will represent India at Miss Teen Universe pageant. Before we start, I will let Riya speak and start the show, because I believe that a lot of you really need the motivation. She was just 19 when she won Miss Universe India, and she has been the busiest queen of the last 2 decades. Over to you, Riya. I think this is better. Namaste, कैसे हो आप सब लोग?
कोई एनर्जी नहीं है आप लोगों में. दिस इज योर फर्स्ट ईयर. इट्स फुल ऑफ एक्साइटमेंट. इट्स फुल ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी. दैट इज व्हाट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर. अभी मैं अपने आखिरी साल में हूँ, ऑन माय थर्ड ईयर. So I want to hear the energy now. So when I ask you again, how is everyone? Wonderful. JNU University आपको बहुत ही ज़्यादा, it's very exciting because it's your first year. I remember when it was mine, I was full of this energy. There was this excitement in me because I knew that there was so much more to learn. There is so much friendship, so much education that you can involve yourself in. And it's very special because first year, there's nothing like it. You're going to create friendships for life. You're going to learn things that you're going to use in your future. And one thing I'll tell you, which is very important, 19-20 साल के होंगे ना आप सब लोग अभी तो. 19-20 साल में जो चीज़ें आप कर सकते हो, आप गलतियाँ बना सकते हो, आप उसमें से सोल्यूशन बनाकर आप इम्प्रूव कर सकते हैं. You can become the person, the adult that you are meant to be. When I was 19, that is when I went for Miss Universe. Mexico में when I represented our country, India, when I wore India's name on my heart, तब मुझे समझ आया कि responsibilities can start early on. हमारे पास जो opportunities है, we are very lucky कि आजकल में हमारे पास social media है, हमारे पास education systems है like JNU University, and many such things that allow us youngsters to perform. So make sure that you realize that you have that responsibility. You have it in you because you have the opportunity. आप लोग यहाँ पर है, इसका ये मतलब है कि आप कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं. So make sure you make a difference. Make sure you make your parents proud, जिसने इतनी मेहनत की है आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, आपके टीचर्स को जो आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाएंगे, और ऑफ कोर्स ये आपका फर्स्ट ईयर है तो और भी सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं. So take opportunities as they come and make sure you make the most of it. Thank you. How many engineering students are here? Just raise your hands. Engineering students. Oh, I can see a lot of them. Guys, you are engineering students. I really expect that you'll have more energy. I'm an engineer. Look at my energy. Okay, once more. Can I hear a loud cheer from the engineering batch? Louder. Engineering वालों, please थोड़ी power तो दिखा दो. बहुत कुछ करना है. इंजीनियरिंग से तो सब कुछ स्टार्ट होता है. It starts, we say that engineers do everything in the world. Okay, engineers, can I hear a loud cheer? अब लगा इंजीनियर से मिले हैं हम. So at least engineering and non-engineers, how many of you here? Can I have your hands raised? Non-engineers. Ab let me see who has the better energy, engineers or non-engineers. It's a time for non-engineers. Can I hear a loud cheer from the non-engineers? Engineering walo, please learn something. Okay, today we're gonna have some of the sub-contests. We'll have some giveaways from the Miss Universe India organization, and we'll call some of you to meet the queens. How many of you are excited? Okay, I can see the hand raised. Do we have mic for her? Okay, we're gonna continue this a bit later. How many of you knew about Miss Universe India? How many of you knew about Miss Universe India? Can you raise your hands? Okay, very few of you. We're gonna have some quiz in a while. Use your Google and read the Wikipedia for Miss Universe India 2024. I'm gonna ask you a few questions, and trust me, I'm gonna reward you with some beautiful goodies today. Are you excited? Guys, please, can I have some energy? Okay, one cheer for JNU. I like it.
Okay, anyway, I'm gonna give the mic to the teen queens because it's their first appearance post their win, and I think they deserve this platform so that they can convey their words to you guys because they are less than 18 now, and they're going to represent India on a few of the biggest international pageants. Okay, I'm gonna call Divya first. Hi everyone, Khamma Garni, Rajasthan, Jaipur. I hear it's your first day here, and I wish you all the very best because believe me, college is going to be the most exciting time of your life. I'm a college student myself. I remember on my first day, even I was very nervous, but as you spend more time here, you find your tribe here, you're gonna love it. And there's gonna be nothing like this. So all the very best. Thank you. Let's have Ruchi Jadhav. Namaste everyone. So, since it's your first year, you guys have a better future ahead. Even I am an engineering student, and along with it, I'm also doing modeling and now pageantry. So, my advice to you all is just be yourself. Try new experiences, new interests, because you are not going to get these years back. So make the best use of your youth and keep inspiring others along with your journey. Thank you so much. Over to Niranjana. Namaskar everyone. I hear it's your first day. I can't give you much advice as I'm still in school, but one thing that I can truly say is that follow your dreams no matter what. You have no idea what your dreams can do for you and how far you can go if you just take a small step by following it. Thank you. Shuddhi. Namaste everyone, I am Shuddhi Mahesh, Miss Teen Earth India 2025. I am currently pursuing 10th grade, so I don't know if I can really tell y'all something, but definitely as it is your first day over here, I wish you all the very best and I hope that you make the most out of all of these years that you have here. And also, please try new experiences. It's one thing that I love doing. When you try something new, you really don't know if you're better at it or you can become good at it, so you never really know, so it's better to try everything and just be yourself. So I just wish you all the best and have a nice day. Thank you. And last but not the least, Ms. Arna Chaturvedi. Hello everyone, my name is Arna Chaturvedi and I'm also from Jaipur. And I hear it's your first day of your first year. I have my college next year, so I'm very excited for that as well. I just want everybody here to understand that I have also always been very excited and intrigued by the college life. I've had my seniors, my sister, I have an amazing life in college. But something which I would advise is that always have a motto to make your parents proud, because they have put their heart and efforts and soul to put you guys where you are today. Work hard, have an amazing life, make so much memories here, but never forget your goal. Thank you.
Thank you very much. Can you just make it louder? Yes. Can you all give a round of applause? Wasn't it amazing? Wow! Such beautiful fairies on stage, scintillating smiles, and beautiful advisors, beautiful suggestions. So, thank you very much, beautiful young ladies, once again, and congratulations. I request the team, technical team, to take up for the interaction with the students. If they have any question to ask to your favorite diva or Miss India Universe, please go ahead. Can I request you to provide mics to the student? Can you raise your hands, please? Can we begin the interaction? Please give a mic. I cannot give my mic. Please give a mic to a student and can someone raise a hand from here? Okay, come here. Hello, I'm from engineering branch. I would like to ask a question to Miss Universe India. How do you embody confidence in your daily life and how do you convey your thoughts so clearly? Please answer my question. Hi, I want to see where you are. Can you raise your hand? Yes, I am here. Hi. Well, good question, because when I was younger, confidence wasn't something that always came to me naturally. Okay, I'll just come a little forward so all of you can see me. Confidence is not something that is assumed to naturally come to everybody. It's okay not to feel like you have it in you naturally and you've been born with it. It is something that comes with practice. It is something that comes when you make it important to you. When you think in your mind that this is something that I need to work on, this is something that is important to me, and if I don't have this in my life, then I'll have something missing, then it'll come to you. That is when confidence will naturally come into you. You'll start learning, you'll start feeling more comfortable. It won't have to be forced. Yeah. Thank you. Greetings everyone. My question is to Miss Universe India. What does being Miss Universe India mean to you beyond the crown and the title? Wow, that's a really good question. When I was 15 years old, that's when I started dreaming of the Miss Universe India crown. Not just Miss Universe India, I was dreaming of the entire universe. And that made me realize that it's not just about the title. It's very little about the title, actually. It's about how many people you get to reach. Like, for example, today, when I get to stand in front of all of you, when I get to talk to all of you, there is so much in my heart, there is so much learning that I have gotten through my experiences, that I really think that when I get to share it, the more knowledge you share, the more you gain is what I feel. So I really, really wanted to focus on that and engage as many people as possible and, you know, get all the love that I possibly can, as well as share the love. Thank you, ma'am. Next, please. Thank you. Hello, good afternoon. My question to you is that what does beauty mean to you beyond physical appearance? A lot of the times, people have this assumption about pageantry, that it's about the outer beauty. And it cannot be more further from the truth. It is just the presentation that the girls have, they just dress up. But the main thing about pageantry is, like I said before, to engage people, to get people together, to spread a message, to bring out change. Like, for example, when I was 15, when I started looking at pageant girls, when I saw all the change that they made, I was inspired myself in order to go out there and change what I can, bring out as much good as I possibly can in this world. And that's what it's really about. It's not about, you know, looking the way you do or showing your face. It's not about that at all. It's further from the truth. It couldn't be more further from the truth. Thank you. Hello, I want to ask the question to Miss Niranjana Tiwari.
To whom? Miss Niranjana Tiwari. Good afternoon. I'm Muskan Sharma. I want to ask that what was the biggest obstacle that you had to overcome? Sorry, could you repeat? The biggest obstacle. The biggest obstacle that you had to overcome? Biggest obstacle, I believe I didn't really have any because I had the support of my parents. That was, we are so loved and we get we get all the support that we require. Because of it, I don't think that I ever faced any obstacle because we was hand gifted everything that we required. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Hello, my question is to Miss Universe India. Hi. Ma'am, I'm still nervous asking you this question. I want to ask you, how do you face or tackle the nervousness that happens to you on stage? I mean, you know. Nervousness is a very real thing. And I think this is a very good question, especially for university students, because I get it. When you go on stage, you are going to shiver, you are going to feel nervous, and there's no stopping that until you do it over and over and over and over and over again. That is what happened with me. Like when I first time had to go on the stage and talk, that was in my university. They expected me to give a speech and be prepared, and I was like, oh, how am I going to do it? How am I going to be so ultra prepared in front of hundreds of students, hundreds of parents, because they had also come. But I think what happened is, I did it so many times that the fear just went away, and it becomes fun after some point. You need to look at people for who they are. They're just people. They're just like you. They aren't any different. And one trick that you can use if you just need to overcome that fear and you have to give a speech, like if I call you on stage right now, look at people's foreheads. That's a very good tip. I used to use that. If you look in their eyes, it's kind of scary. But if you look at their foreheads, it's not as scary anymore. Thank you so much. Good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is to you that how you use your platform to spread the positive energy in the youth? Could you say that again, please? How do you use your platform, your title, to spread the energy in the youth? Ooh, yes. As a 20-year-old myself, and as somebody who had won at the age of 19, automatically people start to see you and think to themselves that, okay, wait, somebody who is the same age bracket as us can do something. That's exactly what happened with me. I saw somebody of my age and I was like, wait, this is possible. This is something that can be done. And so when you see me today, even the boys, I feel like a lot of the times the girls are the only ones who find resonation when it comes to pageantry, but it's really about everybody. It's about bringing everyone together. So that is very important. It's not about the girls, it's about the youth. It's about bringing energy, bringing attention to things that have not been brought to attention enough. So yeah, I think it's very important, and I think it's been done pretty well by the pageant queens these days, especially with the advent of social media, when we all can come together and really see what they do in their day-to-day life. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. My question to you is, how is it to be beauty with brains? All of us are beauty with brains. So I think you can ask that question to yourself. As long as you're a good person, and as long as you're trying to do whatever good you can, it doesn't have to be extravagant, it doesn't have to be very blingy and showy. It can just be a small, good change that you bring to somebody else's life. I mean, try it out yourself. In fact, give yourself a task today that you do something good, make somebody happy, bring a smile to somebody's face. Maybe if you go out today, if you have maybe extra food with you, share it with somebody else. That is beauty with brains, I think. Thank you so much. Thank you. Good evening, ma'am. My question is, what's your looks maxing exercise? Could you please say that again? Looks maxing exercise.
Looks maxing exercise. Looks maxing. Oh my god. I have heard of this before. And I think a lot of guys over here must be using that term. They must be searching up how do I do looks maxing. But I think the most important thing is try to stay fit. Try to, do whatever best you can. There are no tricks and tactics that you can use to look the way people do when they edit their photos. So do your best, eat clean, go to the gym, study, because I think the most attractive thing about a person is when they're smart in their mind. So yeah, that's how you can look max. Thank you. My question is to Miss Universe India. Good morning, myself Shagun Parashar. I want to ask, what message would you give to youngsters to have a strong mindset, especially to girls? That is the trickiest thing ever, because when you have a very strong mind and you're like, ye to karna hi hai, ye to definitely I have to do it this way, and this is the only, that's how I used to be. I used to be very stubborn, and my parents used to be very annoyed by that, like, oh my god, she, does exactly what she wants, she would not listen to anybody. But I used that as a strength in order to make something that can be negative into a positive. You need to work in that direction. That is what I believe in the most. You don't need to change yourself. If somebody tells you that you are a certain way and that makes you unworthy, use that as a propeller, use that as your strength to really push you forward. So when I was really strong-headed, very strong mind, I just used that as my strength, and that worked in my favor. I think that must be for you as well, right? Thank you. Thank you. Thank you so much. Is it over? No, one more? Well, right now, my heart is beating very fast right now. His heart is beating fast, he said. Well, my name is Yash Kumar from Engineering Department. So my question to you is, what has been your biggest failure and what did you learn from it? Yeah, I mean, honestly, we live in a real world where failures are a part of life, and people don't see when you have those failures. They only see your successes. And I understand that it can be disheartening, but the winners that you see in real life are not ones that are overnight. They are the ones that have faced failure, not once, not twice, many times, many times, and have come back stronger. I have faced my fair share. And to be honest, the reason why I deserve this crown, the reason why I deserve a position where I can talk to people like you, is because I have faced those failures. So today, for example, if you face something that you're like, oh, I wish this never happened, believe me, when you will have your successes, you'll remember this time again, and you'll be like, thank God that I faced this failure, because I'm the best version of myself, and I appreciate all of the successes even more because of the failures. Thank you. Okay, one more question. Yes. What is success for you at this stage of life? I love that question because it is quite deep. Initially, I used to think success is money, success is fame, success is tied to all of these individual things. But really, once you get all of those things, success is peace. The day you can say, I'm happy with myself, I'm peaceful, and I think peaceful is also not the word, and there is no exact translation in English, but the Sanskrit or Hindi word is shanti. जिस दिन आपको शांति प्राप्त होगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि सचमुच यही एक चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, और सारी चीज़ें जा सकती है. अगर आप शांत हैं, अगर आप अपने आप में खुश हैं, तो आपके पास सब कुछ है. Really. Well, thank you. Thank you. हाय मिस इंडिया, मेरा नाम भूवी है. मेरा क्वेश्चन निखिल सर से है. Okay, yes, please. निखिल सर, आप इंजीनियर डिपार्टमेंट से हो, आपने मिस यूनिवर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो आप, तो आपने ये कैसे किया? It's a very long story, to be honest. 2013, I was possibly, I guess, second year engineering student. When I watched
beauty pageant for the first time. सबसे पहले मैंने beauty pageant 2013 में देखा था, and I believe that it's a great platform. मैंने खुद pageant में participate किया था, then I understood it's a great platform. It's not only the way that we can empower women, but we can also give them an opportunity to live their dreams. What better opportunity to give wings to a lot of girls out there in the country? And it's a very long story though. I mean, someday, possibly when I'll have my podcast or something, I'll definitely speak about it. Thank you. You're welcome. What course are you from? BCA full stack developer. Okay. Best research. Hello, my question is to Miss Universe India. Hi. Good afternoon, ma'am. If our profession and passion are different, how we balance our professional life with our passion? Bring them together as much as you can, if possible. If you are really good with something, try to find joy in it. Try to inculcate what your passions are, or the other way around, vice versa. If you're really passionate about something you love, let's say, for example, arts, then maybe try to make that your career. That's what I did. I tried to make my passion for acting my career, and that is the direction I'm going in. But then again, reality hits. Sometimes you have to do something for your career, and then you have to keep your passions separate. I think take time out for it. It's important to live life in a way where you're happy from inside. So that can only be done when you really go for your passions. So yeah, definitely chase them. Okay, thank you. Thank you. Hey, good afternoon. You are looking so glamorous and you all look so demure. Thank you. I just want to ask, nowadays society is so judgmental. People are so much insecure about their looks. How to overcome that? No, insecurity is very real, especially among us, our age group. Or at least that's what I know of. I'm sure people of any age must be facing insecurities. Some are better to hide it than others. But I think the best thing you can do is protect yourself. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बुरी चीज़ जो है वो इनसिक्योरिटीज़ है. आप दूसरे लोगों को देखते हैं, एक अनरियलिस्टिक इमेज सा बन जाता है. It's an unrealistic image that you're looking at, thinking that that is what reality is, when in reality that isn't even the truth. So find joys within yourself, go to your family, spend time there, do what you love, like I said, follow your passions, and insecurities will start to vanish. And when you find yourself, when you're secure in yourself, the insecurities apne aap se gayab ho jayegi. Okay, thank you so much. Thank you. Good afternoon, miss. My question to you is, how do you stay grounded with so much of fame and responsibility? So important. I think that is the most important thing to do. No matter if there is fame, there isn't fame, I find that there are some people that even, there may be no buzz or nothing, but at the same time, they seem to put themselves at a pedestal and forget about everything that's going around them. That's wrong. Remember where your roots are. Remember why you started. Remember who you are, and remember why you're doing what you're doing. I think the moment you start thinking of all these things outside, you stop becoming somebody. You can never be somebody. You should never be somebody. Always remain true to yourself, true to where you come from, and stay grounded. That's the most important thing. Don't fly in the sky. Chane ke jhaad pe mat chale jao. Thank you, ma'am. Nice to meet you. Thank you. Hello, ma'am. How are you? All good. How are you? I'm good. Firstly, you're looking very beautiful today. And my question is, how do you define success in your way? Yeah, I think I already mentioned this. Success is जब आपको शांति प्राप्त होती है. I don't think there's an English translation to that. अंग्रेजी में उसमें कोई शब्द नहीं है जो exactly शांति को describe कर पाए. लेकिन जब आपको अंदर से खुशी मिलती है, उस दिन I think you can say you're successful. And I think I am, because I'm peaceful from inside. I'm happy and I'm content. I think that's what it is. And do you think really beauty is matter? It does. Beauty is what comes from here.
It's what comes from the heart. The day you are good to somebody, the moment you start to positively impact others' lives, and you of course improve your own life, you make a positive change every single day, no matter how small or big it is. The moment you start making that change, I think that's what's really important. Thank you so much. You changed my opinion actually. Good afternoon, ma'am. Hi. I Shambhavi, and I want to ask some tricky question to you. What would you do if you wake up tomorrow and you are no longer famous? Wow. If I was no longer considered to be famous, that's okay. Because the reason that this platform is created is not to be famous. It's to try to make change. It can be little, it can be big, it can be anything. What I would do is I would try to first start from ground up. See, I think one of the privileges I get with what they call the fame is that I get a platform to speak. I get to engage with all of you. I get to share my experiences. That's one of the benefits. अगर मेरे पास ये नहीं है, तो फिर मैं अपने छोटे छोटे सर्कल्स में जाके उनसे मेरा इन्फॉर्मेशन बांटूंगी, उनसे इन्फॉर्मेशन लूंगी, because it's not enough to just keep talking. It's not enough to just keep sharing your information. सुनना भी बहुत ज़रूरी है. So change making starts with listening, knowing what's going on, and doing what you can from it. And my another question is to you. When you are on the stage of Miss Universe India, then I think you have suffering from some time that you think that I am no longer to get this position or something else. So what was going in your mind and what was happened to you? Yeah, that's a real fear for people. Oftentimes they think that this is the end and be all. It's not. Pageantry is not a career. Pageantry is not something you can rely on. It is a position that you take on for 1 year. So the day I was crowned, I was fully aware about the fact that ये 1 साल है मेरे पास जहाँ पे सब सुनेंगे मिस इंडिया को, और उसके ख़त्म होने के बाद I'll still remain Riya Singh, I'll still remain Miss Universe India 2024, where I can talk to people like you. And I think that, that's the only thing that really matters. It's what you can make out of it. It's only for 1 year, and that's all you have to do. You have to focus and make the most of it in that 1 year. And then of course उसके आगे आपका career बनाना भी बहुत ज़रूरी है. मैं 20 साल की हूँ, पूरी life बाकी है अभी तो. Another question is, when you getting crown on your head, is it feel heavy? Sometimes? Not initially. Like when I put it on in the morning, it's not that painful. But like right now, it's starting to like sink into the skull. So for the first time? No, it's not, because when you put it on, it's not painful. But like the weight slowly sinks into your head, slowly. And sentimental feeling when you headed? Yeah, no, it's very emotional. Honestly, everything goes numb. I could see my parents. If you've seen the crowning video, I quickly ran to my parents and I'm like, it's real, it's on my head. So yeah, it was very sentimental. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you so much, and for enlightening the students and giving such clarity in a beautiful voice and a very beautiful manner. Thank you very much. Thank you so much. And dear students, a round of applause for all of us and for the beautiful divas for giving you so much attention and answering all your questions in such an honest manner. That was so good. And thank you so much. And dear students, now it is time to take a lunch break. The lunch is being served outside this pandal, the auditorium. We will meet at 1:45 again here for a cultural program, Nukkad Natak, Ram Walk, dance performances and whatnot. So please, I request you all, you're going to lunch. For lunch, you come back again here and we will meet the divas again. I think it's 1:30, so 2:15 you can come back here.
Thank you very much. Thank you so much, everyone. Thank you. And we'll meet here again. I request Dr. Divya to take care of the dignitaries. Students, kindly be seated. There's an important announcement. Thank you very much. Request the students to be seated once again.